Hi everyone, this is Navika Chauda, a cloud engineer and a Microsoft most valuable professional in developers technology. I warmly welcome each one of you to today's session of Tech Site, a chat show with my visually impaired students, Pavan, Vishal, and Parmeet. So I have been associated with them for a couple of years now. I got an opportunity to mentor them and empower them with the Microsoft tools and technology such as Office 365 tools, cloud computing, and Microsoft Azure. And believe you me, every single day they have inspired me with their zeal and enthusiasm to learn technology in spite of all the challenges that they have been facing. So, in this session of Tech Side, let's hear them out. Let's hear the journey, the challenges, and how they've overcome it, and their technical expertise. So, without any further ado, let's get started. I warmly welcome three of you, Pavan, Vishal, and Parmeet. Thank you so much for being a part of today's session. Let me give a quick brief introduction about each one of them, and then let's get started. Starting with Pavan Soni, he is from IGNU. He has extreme knowledge in computer hardware. He has a lot of knowledge in hardware configuration, hardware maintenance, troubleshooting. He has also knowledge in basic networking and operating system. He is pretty much interested in Microsoft tools and technologies like Office 365 tools, cloud computing, and Microsoft Azure. Next up is Vishal Seni. He is from Delhi University. He has a lot of knowledge in audio editing, which includes adding effects, adding dynamics, and formatting the audio files. And he is also Azure certified in AZ900 Azure Fundamentals. He has a lot of knowledge in Azure and cloud computing and Microsoft Office 365 tools. And last but not the least, Parmeet, he is also from Delhi University and he is completely passionate about digital marketing, which includes SEO, website development, and graphic designs. He has keen interest in cloud computing and Microsoft Azure. Thank you so much, three of you, once again, for being here for today's chat show. I Now, without any further ado, let me get started with the very first question. And honestly speaking, even I am very curious to know personally, and I'm sure even the audience would be having the curiosity for the same. When we talk about technology, right? So technology is a very vast field, right? And so is the computer subject. It is pretty much technical. uh, but even for us as normal people, it's not an easy decision to choose, technology as your career field. But my question is, for you guys, in spite of all the challenges and all that you have been facing, what made you choose technology as a field to pursue, right? What interests you the most in technology, and how do you go about it? A simple question: why technology? So I think, I'm sure we would love to hear the answers and your different stories of each one of you. So maybe we can start with Pavan. If you can just start sharing your story, what interests you about technology the most? Thank you, ma'am. Thank you for including this tech side show. Actually, from my childhood, I usually play some toys and यूजुअली टेक्नोलॉजीज़ के साथ में मतलब मुझे शुरू से ही चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। सो व्हेन आई व्हेन आई यूजुअली परचेज़्ड एनी टॉय सो आई यूजुअली वांटेड टू नो कि इसका जो मैकेनिज़्म है, वर्किंग मैकेनिज़्म क्या होता है? सो हाउ इट वर्क्स एंड यहाँ पर मतलब जो भी मैं टॉय परचेज़ कर लेता था उसके बाद यूजुअली 2 आफ्टर 2 or 3 days I I usually curious about the toy कि कैसे वर्क करता है इसका मैं मैकेनिज्म देखता हूँ। सो यूजुअली मैं उसको लाइक एक्सप्लोर करता था लाइक इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये कैसे मतलब कैसे ये बना हुआ है एंड आफ्टर दैट after that sometime I will
I was in my स्कूलिंग टाइम सो यूजुअली मैं जब नॉर्मल स्कूल में मतलब मेरा एजुकेशन स्टडी चल रही थी मेरी सो वहाँ पर कुछ नॉलेज नहीं थी मुझे सो इन 2012 व्हेन आई वाज अराउंड 13 और 15 ईयर्स ओल्ड सो उस टाइम मैंने कंप्यूटर की फील्ड में एंट्री करी और when I was connected with visually impaired people. So I explored many things like different people explore like this field about this field and uh, मुझे ये लगता था कि इतनी सारी कीज होती है कंप्यूटर्स में सो हाउ वी कैन रिमेम्बर ऑल द कीज ऑल द कमांड्स ऑल द कीबोर्ड सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगा कि मतलब नॉर्मल लोगों से हम लोग मतलब एक्सेस नहीं कर सकते चीज़ें बट आफ्टर सम टाइम I got an information about the JAWS software like NDA and TalkBack and the iOS devices like VoiceOver etc. So वहाँ पर मुझे पता लगा कि it is very easy and we can use it without any problem without any uh, challenges तो बहुत ही ईज़ी था हमारे लिए लेकिन सबसे पहले मैंने जब इंटरेस्ट मेरा हुआ वो ये हुआ कि मैं व्हेन आई स्टार्टेड टाइपिंग समथिंग इन एमएस वर्ड सो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजी में इंक्रीज होता गया एंड उसके बाद धीरे-धीरे स्टार्ट किया मैंने 2018 में लाइक आई I did some courses from online resources like uh, learn1.com and some website like itronics.com सो वहाँ से मुझे कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिली सो इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करी लाइक CompTIA A+ का सर्टिफिकेशन लिया सो उससे मेरा और मतलब मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ आई कैन डू एवरीथिंग एंड in COVID period, so I learned lots of things from Navika ma'am. And मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 Azure के बारे में एक्सप्लोर किया सो उसका अभी अबाउट टू सिट इन दिस एग्ज़ाम सो यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की देन यहाँ पर मेरा हार्डवेयर में इंटरेस्ट उसके बाद ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगा लाइक आई थॉट अबाउट दैट कि हम क्यों किसी शॉपकीपर के पास जाएँ? क्यों लाइक जब मैं देखता था कि कुछ टास्क के ही शॉपकीपर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस करते हैं। सपोज़ अगर हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन करवाने जाते हैं किसी भी शॉपकीपर के पास में, so they charge usually around 600 or 700 समथिंग। तो उसके बाद मेरा और एक्सप्लोर करने का मन किया सो इंटरनेट वेयर आई रिसर्च अबाउट द इंटरनेट ऑन द इंटरनेट अबाउट दैट कि कैसे हम लाइक एज अ टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं इस फील्ड में सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स मुझे मिली एंड यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की कई बार मैं फेल भी हुआ अपने लाइक लेकिन वहाँ पर मैंने अपने ही सिस्टम पे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें मैं फेल हुआ कई बार सो फेल होने के बाद फिर I recognized my mistakes and improved all the mistakes कि हम कैसे और ज़्यादा बेटर वे में सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अभी तक मेरा और ही इंटरेस्ट है और बढ़ते ही जा रहा है टेक्नोलॉजी में क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें भी ऐसी भी हैं जो हमें और भी अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू। Thank you, Pawan. And I mean, it is so inspiring to hear that कि आप लोगों ने you know you guys are unstoppable basically, कि तुम लोगों ने शुरू करा and then you kept on exploring, right? And that is very inspiring. And as you mentioned, even if you used to fail in doing a particular task, you should not let down yourself, right? And you used to try it again and finally you succeeded. That's something so inspiring, so amazing. Thank you for sharing your story, Pavan. Moving ahead, Vishal.
We would love to hear from you as well. Uh, yes, so thank you, ma'am, for providing this opportunity. So I have an interest in technology, even though I am visually impaired. My first experience with computers happened in fifth grade. Before that, I believed that blind people couldn't use computers, but then I saw students in my school using computers with the help of screen readers. So this made me curious, and I started learning about computers as a subject in sixth grade. My teachers mostly taught us some basic things like typing and saving files, etc. Uh, but I wanted to understand more, so I began exploring computer on my own. Uh, when the COVID pandemic started, everything changed and the technology became new normal. Uh, I learned a lot during that particular time, and Navika ma'am introduced me to Office 365 tools and Microsoft Azure. I even took a test called AZ900 and I passed it. So that's how my interest built in this field. So this is the uh, story from my side. So yeah. Thank you, Vishal. Thanks a ton. Um, Again, I mean, the best part is curiosity, right? You were always curious to learn something new, and that's the best fact, right? And no doubt that now you guys are so technical experts, I can say, in a way, because of this nature of yours, curious nature, right? Like even Pavan, and same goes with you, Vishal. And now we have Parmeet, who would be telling his part of story, how technology interests him the most. So, Parmeet, over to you. Okay, so myself Parmeet Singh, and thank you Navika ma'am to giving me this great opportunity. Uh, I'm passionate about the technology. Uh, टेक्नोलॉजी जब मैं काफी छोटा था तो ये था मेरे साथ कि जब से स्मार्टफोन आया था सो आई एम एक्सप्लोरिंग इंटरनेट एंड मैंने ये जाना कि वेबसाइट्स के बारे में जाना न्यू एप्लीकेशंस के बारे में जाना और आई एम very curious to know that how it works and how the how it works like websites applications etc so जानने में बड़ा अच्छा लगता था कि ये चीजें आखिरकार काम कैसे करती है कि अगर एक वेबसाइट है उसका लेआउट है तो वो किस तरह से बनाया गया है या कोई एप्लीकेशन है वो किस तरह से बनाई गई है तो ये जानने में काफी इंटरेस्ट आता है तब से ही आता है जब मुझे स्मार्टफोन के बारे में पता चला मैंने इंटरनेट एक्सप्लोर किया ज्यादा से ज्यादा और इसके बाद काफी चीजें हुई लाइक ये मैं जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ी नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो इंटरेस्ट बढ़ता गया टेक्नोलॉजी के बारे में और इन द कोविड पीरियड हम नविका मैम से मिले और इसमें उन्होंने हमें टीच किया AZ900 जो कि एज्योर का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का उसमें हमने हमने काफी चीजें सीखी माइक्रोसॉफ्ट 365 टूल्स एंड मेनी मोर थिंग्स और इसके बाद काफी चीजें और भी अलग अलग हुई जैसे जैसे स्टार्टअप्स का भी बूम आया हमने स्टार्टअप देखे काफी सारे यूनिकॉर्न बने जो कि सैस स्टार्टअप थे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऐसे स्टार्टअप्स में मुझे काफी इंटरेस्ट था कि कैसे काम करती चीजें कैसे होता है सब कुछ लाइक और फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना मैंने लाइक डिजिटल मार्केटिंग में SEO वेबसाइट डेवलपमेंट वर्डप्रेस के थ्रू किस तरह से हम वेबसाइट बना सकते हैं थीम्स कैसे वर्क करते हैं प्लगइन्स कैसे वर्क करते हैं हाउ इट वर्क्स और इसके साथ साथ मैंने ये चीजें मैंने कहीं से मतलब किसी ने मुझे सिखाई नहीं ये मैंने खुद यूट्यूब से और ब्लॉग्स रीड कर करके मैंने ये चीजों को ग्रैब किया एंड एंड इसके साथ साथ ही मैं मतलब चीजों को सीखता गया आगे बढ़ता गया और
काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन किए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि AZ 900 का मैंने सर्टिफिकेशन किया माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का, और उसके बाद मैंने NIIT का एडवांस कोर्स भी किया इन एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अभी फिलहाल मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, और साथ साथ कर भी रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं करता हूँ ऑन द कैनवा। कैनवा इज अ सॉफ्टवेयर, सैज सॉफ्टवेयर, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग SEO, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स कैसे वर्क करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, ये सब मैं चीजें सीख रहा हूँ अभी। और गूगल एड्स कैसे वर्क करती है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। सो ये सब चीजें मेरे को काफी मतलब क्रेजी लगती है काफी टेक्नोलॉजी के बारे में। और मैं अभी कोड वेबसाइट भी फिलहाल सीख रहा हूँ कि किस तरह से HTML और CSS PHP का यूज करके हम एक वेबसाइट को बना सकते हैं, उसका लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस सब मैं भी सीख रहा हूँ। और बस ये चीज काफी मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू। Thank you so much, Parmeet, and that's too much. That is too much. Um, थैंक यू मैम। I am really inspired, and I'm sure whosoever is listening to this would be inspired as well. Um, Honestly speaking, the best part that I found was that, as I mentioned right in the beginning, your enthusiasm to learn new things, right? या That is the best part. All three of you, I mean, no one told you to do it, right? It came from your inner self that, okay, no, we have to become something in life and we want to learn these all stuff. And hats off to each one of you, because it takes a lot of courage to do that and a lot of hard work as well. And I know that because I have been associated with you and I have seen your journey for a couple of years. So thank you so much once again for sharing this थैंक part. यू। थैंक यू मैम। Now, quickly jumping on to the next question, because now that I have seen, we all have seen that you are so curious about technology and you're so curious and eager to learn new technologies, right? And as you have already mentioned, Parmeet is into digital marketing, Pawan is into hardware, Vishal is into audio editing, etc., etc. We would love to know about your technical strengths. What have you achieved, or what have you been working on, and how the entire thing has been. So we would love to hear your technical strengths, your technical skills. If you could just if you can just sort of throw a light a little bit on that. So we will start with Pawan. So, thank you, ma'am. And if I talking about my technical strength, so I I done and I explored lots of things on the internet, but some certification that I want to mention here. Uh, for example, like first, I completed my certification from NIIT Foundation, New Delhi, in CCAB certificate course in basic active. सो उस टाइम क्या था कि जब मैंने अपना लाइक कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ था बट एक सर्टिफिकेशन का मुझे नीड लग रहा था तो उस टाइम मैंने लाइक जो भी लाइक NIT से मैंने CCAB का जब सर्टिफिकेशन किया सो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रिवाइज हुई एंड सेकेंड वन CCAWA फ्रॉम NIIT फाउंडेशन सेकेंड वन सर्टिफिकेशन भी मैंने वहीं से गेन किया that was about like Microsoft products like Word and Excel, especially Excel and Excel, advanced level of Excel. सो बेसिक लेवल का पावर पॉइंट वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें सिखाया गया था एंड उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन लिया लाइक कंप्टिया A+ एंड इसमें तो सिक्योरिटी का होता है कंप्टिया A+ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिडरेशन बैच लैंग्वेज एंड इसके अलावा आइट्रॉनिक सोल्यूशन से मैंने काफ़ी सारे क्विज के सर्टिफिकेशन गेन किए हुए हैं and eSkill India. I have certified from eSkill India in the hardware field. तो वहाँ से मुझे काफ़ी काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड हार्डवेयर की फील्ड के बारे में प्रॉपरली मुझे वहीं से जानकारी मिला लाइक क्या क्या हमें हार्डवेयर के बारे में बेसिक कंपोनेंट्स होती हैं एंड आगे चल के क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं कैसे हम एक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं सारा कुछ
So these are some certification I have mentioned. Although I have around 15 certification, but some certification I have mentioned here. Thank you. Some example I want to share here about my knowledge of hardware, like how we are configure a particular hardware, like कोई सिस्टम है कोई भी या फिर इंस्टीट्यूट में कुछ लाइक एनुअल बेसिस पे जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो आई कैन डू इजीली एंड उसके अलावा लाइक मेंटेनेंस ऑफ हार्डवेयर, लाइक अगर हम किसी हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम तो एनुअल बेसिस पे या फिर पीरियडिकली बेसिस पे उनको मेंटेनेंस करना होता है, सो इजीली आई कैन डू बाय फ्रॉम माई सेल्फ। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो हार्डवेयर का लाइक कोई भी कोई ऐसी प्रॉब्लम या फिर कुछ टेक्निकली ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके कोई प्रॉब्लम आती है जिसके लिए हम यूजुअली वी गो एट द शॉपकीपर एंड दे चार्ज दे चार्ज मोर एंड मोर, सो वो बेसिकली इजीली आई कैन डू इट। एंड ऑल्दो मैंने इंटरनेट से ही सारा कुछ यहाँ पे सीखा एंड एक्सप्लोर किया, बट अभी अभी जो मेरा लेवल है वो इस तरीके का है कि आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट एनी असिस्टेंट। सो ऑल्दो कुछ कुछ डिवाइसेस में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई चीज़, लाइक अगर हमारे पास कोई ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिसमें कोई स्क्रीन का प्रॉब्लम है या फिर कोई ब्लैक स्क्रीन आती है, तो उस टाइम पे वी वी यूजुअली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर डिवाइस, लाइक उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गेन करना पड़ता है कि वो डिवाइस का लाइक मॉडल कौन सा है, उसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें, क्योंकि ये हार्डवेयर टू हार्डवेयर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो सम स्टेप्स जो हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। इसके अलावा बेसिक नेटवर्किंग के बारे में आई वांट टू मेंशन एज वेल। सो बेसिक नेटवर्किंग लाइक configure a router and network devices like switches, hubs, bridge, and I also can host a server as well through the VMware operating system. That is also a server operating system. So these are some examples of my implementation in hardware. Thank you, Pawan. I'm just getting inspired more now, right? And it is not some examples, these are a lot many examples. And I'm so proud of the fact that you guys are doing all by yourself. As you said, you have just learning these all things through internet. And now you have reached a stage wherein you are pretty much confident about your skills and you can implement all that stuff by yourself without any assistance. So kudos to you for that. Next up, we would be having Vishal. So, yeah, Vishal, please share your technical skills with us. Uh, so yeah, I'm really good at using 365 tools like Word, PowerPoint, Outlook, etc. I can create documents, slideshows, manage emails with them. I also know about Azure, which is like a super smart computer in cloud that helps with all sorts of tasks. Additionally, I know how to work with audio, like making changes to sound recordings to make them sound better. So I'm comfortable with a bunch of cool tech stuff. So yeah, these are my some fields which I um, usually use and am proficient in. So much, Vishal. That was indeed very, very inspiring. Next, we will jump to Parmeet then. On to you, Parmeet. Yes, ma'am. So my technical skill is
uh, my technical skill is a more skills. I like that, and my in I like that like Microsoft Azure and digital marketing also. And in the digital marketing, more things, to explore, like SEO. And SEO is the best part of the digital marketing for me. uh, इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई पेज है तो उसको अगर हमें रैंक करना है गूगल के ऊपर, अगर कोई बिजनेस वेबसाइट है, तो हमें उसको गूगल के ऊपर सबसे ऊपर रैंक करने के लिए कुछ इस तरह से कीवर्ड यूज करने होते हैं, कि वो एक पर्टिकुलर सर्च पे वो रैंक करे। तो इसमें हम यूज करते हैं एसईओ का, जिसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा बिंग में भी काम करता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर है, और गूगल में भी काम करता है। तो ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, और मतलब काफी अच्छा लगता है मुझे। और इसके अलावा पेड एड्स वगैरह भी होती है, जिसमें कि गूगल एड्स और फेसबुक एड्स होती है, जिसमें हम बिडिंग कर सकते हैं अपने सर्च को ऊपर दिखाने के लिए। एंड ये काफी चीजें मेरे को अच्छी लगती है। और ऑलमोस्ट मेरा जो स्ट्रेंथ है और मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, और वेबसाइट डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी मैं इन सब चीजों को भी मतलब जो आगे टेक्नोलॉजी अभी इसमें एक्सप्लोर करने को बहुत ज्यादा चीजें, लाइक अभी हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो उसमें हम चैट जीपीटी को हमने देखा। तो उसमें भी मैं काफी इंटरेस्ट है मुझे, और उसमें मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। लाइक किस तरह से हम उसको प्रॉम्प्ट दे कि हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट मिले। ओके, सो these are more important to learn to learn that. Okay, so these my skills. Thank you. Thank you, Parmeet. This is something that even I have learned about search engine optimization. That's something new for me as well. I mean, I've already heard about it, but as you've just told about it's working, so that's like a knowledge for me as well, an additional knowledge. So thank you for that. Thank you so much, Vishal, Pawan, and Parmeet, for sharing your technical skills and your area of expertise with us. Thank you so much for that. And before moving forward, let me tell you that's a commendable job that you all have been doing. Um, this leads to this all of what you have actually shared with us. It's actually now leading me to ask another question out of curiosity, that how do you actually implement all these things? How do you execute it? Like, what type of software tools you use, or you use a screen reader or something? You can maybe take an example. You can just, sort of try to explain us all that how do you actually do that, because it's tough to do it otherwise, right? So with the help of which tools do you do it and how do you implement it, so it'll be a good insight for us also to know. So we will start with the Pawan. You can take it up. Yeah, ma'am. So basically, what happen it is कि अगर हम कोई भी चीज़ को implement करते हैं, like if we talking about like how we use uh, desktop or laptop. So usually होता क्या है कि हम like एज अ विजुअली impaired people हम इंस्टॉल करते हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर लाइक स्क्रीन रीडर लाइक जॉज एंड वीडीए और it can be narrator of Windows. This is a Windows by default screen reader, ये ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। सो इसमें क्या रहता है कि हम लाइक जो भी कीबोर्ड से कमांड्स प्रेस करते हैं, वट एवर वी प्रेस फ्रॉम द कीबोर्ड, so we get uh, results through the speech feedback. So उस केस में हम लोग easily एक्सेस कर पाते हैं whatever is appearing on the screen, and whatever activity we are doing on a particular web browser or particular application, etc. And different different things हैं, like अगर हम फ़ोन की बात करें, so we usually use the talkback in the Android devices, like uh, many devices are providing their talkback feature with their operating system, like Samsung and
Xiaomi एक्सेट्रा, वन प्लस। सो इन सब में ऑलरेडी ये बिल्ट इन आता है फीचर। ऑल ऑल हमें क्या करना होता है, सिंपल से इसको ऑन करना होता है। सो वंस वी ऑन दिस फीचर, सो इसमें क्या रहता है कि हम जैसे ही स्वाइप करते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पर भी हमारा एक कर्सर स्टार्ट होता है। जैसे हम स्वाइप करते हैं, सो यूजुअली वी गेट रिजल्ट फ्रॉम स्पीच फीडबैक, सो वी कैन यूज इट विदाउट एनी असिस्टेंट इंडिपेंडेंटली। इसके अलावा लाइक वी यूज लाइक एटीएम्स एंड कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस आ जाते हैं हमारे पास, लाइक कुछ ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम है या फिर कुछ डिवाइस इज नॉट टर्निंग ऑन। सो उस केस में वी हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीपल। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस होता है या कोई भी कुछ भी सिस्टम होता है, अगर वो हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आया है या फिर सर्विसिंग के लिए आया है, रिपेयर के लिए आया है, तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई करना होता है। सो वी फॉलो सम स्टेप्स। सो उसमें क्या होता है, लाइक अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम ऑन कर रहे हैं कोई किसी भी पर्टिकुलर लैपटॉप या डिवाइस को हम ऑन करते हैं, सो इफ वी गेट एन एरर लाइक बूट डिवाइस नॉट फाउंड, सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जो कि आई लर्न अबाउट इट इन द पर्टिकुलर हार्डवेयर कोर्स। तो उसमें क्या रहता है कि हम पहले एरर को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम सबसे पहले हमें पता है कि ये प्रॉब्लम लाइक कहाँ से आई है, बूट डिवाइस को लेकर आई है। सो वी हैव टू गो इनटू द डायरेक्टली बायोस। बायोस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द पर्टिकुलर लैपटॉप और डेस्कटॉप। इट यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। सो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लाइक MSI, HP, Dell एक्सेट्रा। सो इसमें हमें जाके वी हैव टू चेक द पर्टिकुलर डिवाइस, इट इज़ डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। लाइक बूट डिवाइस की अगर हम बात करें तो लाइक it usually it this error usually comes from hard drive or SSD drive. So uh, first of all we have to identify the particular device which is detective or not detected in the particular BIOS. If it is detected, so we have come to the next step. So उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट फर्दर स्टेप्स होते हैं, लाइक कनेक्शंस हमें चेक करने होते हैं, एंड वी हैव टू eject the particular device, and after that after clean the particular device and insert it in the particular slot. So अगर वहाँ पर भी ये फेस नहीं होता है, so now we have to come to the third step, and which is RAM part of the particular system. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इफ़ वी टॉकिंग अबाउट सम नेटवर्क डिवाइसेस, सो नेटवर्क डिवाइसेस में कभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमें ऐसे ही ट्रबल शूट करना होता है। सो वी हैव टू यूजुअली आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो ही हम एक स्टेप्स के द्वारा ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से है, लेकिन वो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप टू आइडेंटिफy the particular problem. So these are some example that how we implement our skills, and how we identify the problems on the particular devices. Thank you, Pawan. That was so detailed and it was so good to know, like the type of procedure and the steps that you follow while troubleshooting any issue. And that was really informative. I'm even sure for the viewers as well that how you follow the exact procedure. And yeah, thank you so much once again. Um, Next up, we have Vishal. Usually use screen readers like NVDA non-visual desktop access and narrator. These are like helpers that read out the text of the computer screen for us. I also use Google Lens, which helps me to understand things like pictures and captchas. There are also special programs that can convert image into readable text. So I also use those softwares, and in special case, and in special cases, I also take help from sighted people. Yeah. So this is my way to interact with the computer. Okay, thank you so much, Vishal.
And thanks once again. Parmeet, over to you. So I can I use to explore and to execute my task in the technology field, uh, like to develop the website. I'm using the WordPress. I'm using the WordPress to create a website, like using the plugins or different themes, और इन सबको मैं मतलब यूज करने के लिए मैं मैग्निफिकेशंस मैग्निफिकेशन के कुछ टूल्स आते हैं, उनका मैं यूज करता हूँ। और इनफैक्ट मैं स्क्रीन रीडर का यूज करता हूँ, लाइक जॉस एनवीडीए। एनवीडीए मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है, जिसमें कि मैं माउस से भी जहाँ पर मैं माउस का कर्सर लेके जाता हूँ तो वो चीज जो वहाँ लिखी होती है वो उसको रीड करता है। बाकी कुछ चीजें होती है जो रीड नहीं हो सकती है, सो मुझे मैग्निफिकेशन टूल्स का यूज करना पड़ता है, मैं उसको जूम करता हूँ। तो इसके साथ साथ मैं अपने जो भी टेक्निकल टास्क होते हैं उनमें मैं इन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन को यूज़ करता हूँ स्क्रीन रीडर प्लस मैग्निफिकेशन का। और अपने और साथ में मैं ग्राफिक डिजाइनिंग लाइक कैनवा का यूज़ करता हूँ। और इसमें भी मैं इसमें स्पेशली ये होता है कि स्क्रीन रीडर ज़्यादा काम नहीं करता, तो उसके लिए मैं मैग्निफिकेशन टूल्स का यूज़ करता हूँ। उसमें मैं खुद देख के करता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब विजन है, सो उसके यूज से मैं कलर्स, थीम्स, फॉन्ट्स, इन सब का मैं मतलब बोल्ड, इटैलिक, ये सब मैं पता कर लेता हूँ, मतलब पता चल जाता है इन सब चीज़ों का कि क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज थिंग्स। सो I'm using I'm using these tools to explore and develop the website. Thank you. That's so good. Thank you so much, Parmeet. I mean, even I've got so much of knowledge about these tools. I already had a little bit knowledge once I was interacting with you even earlier about JAWS software and all, but these are a couple of new tools that I have learned today. And yeah, thank you so much for adding this to my knowledge. So thank you so much, three of you, for sharing the implementation of the tasks, how you basically implement the tasks. It was pretty much knowledgeable. This is something new for me also that I have learned today. So thank you for that. But I am sure it must not have been a smooth journey for you. You must have faced many obstacles, many hurdles, many blockers in this particular journey. Um, could you please share the challenges that you have faced while using technologies or implementing such things, what you have been doing, and how do you overcome those? Because I'm pretty much sure that you have overcome all those obstacles, and that is why now you have so much of technical knowledge in your respective fields. So, yeah, starting with you, Pawan. Yeah, ma'am. So बेसिकली लाइक यूजुअली क्या होता है कि कोई भी अगर हम कुछ भी काम करते हैं, लाइक कुछ भी हम कहीं जाते हैं, सो challenges are the it's a normal thing for us because we know कि challenges आने ही आने हैं क्योंकि like we are differently able, so challenges आने हैं, but overcome कैसे करना है, that is a most important thing. So if we go some new place and if we go around like road as well, so काफ़ी challenges आते हैं, but some people do help in crossing the road and इसके अलावा अगर हम कहीं पे like कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम like कोई वेबसाइट नेविगेट कर रहे हैं या कोई कुछ, अगर मैं अपनी बात करूँ अकॉर्डिंग टू माय फील्ड, लाइक आई एम प्रोफेशनल इन हार्डवेयर, सो हार्डवेयर में भी कभी कभार चैलेंजेस आते ही हैं। तो उस केस में वी यूजुअली take the help of any assistant if required. It is not necessary, but sometimes we usually take the help. सो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, लाइक वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई बार वेबसाइट ऐसी आ जाती है, लाइक वी हैव टू फिल द कैप्चा
to continue the login process and verify something. सो वहाँ पर हमें लेना होता है लाइक हेल्प। और कई वेबसाइट्स अभी ऐसी डेवलपमेंट में भी हैं जो ऑडियो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ कैप्चा। So we have to fill the audio numbers of some numbers like some random numbers. So उस केस में क्या होता है कि जो हमारा इमेज होता है वो की इमेज की बजाय हम नंबर को फिल कर देते हैं। सो दीज आर सम डिफरेंस एंड यूजुअली कुछ भी काम करते हैं अगर हम लाइक अगर इफ आई टॉक अबाउट सम नॉर्मल पीपल्स तो चैलेंजेस वहाँ पर भी हैं, राइट। सो चैलेंजेस किसी के भी साथ में आ सकते हैं। सो ओवरकम कैसे करना है हमें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड वी easily overcome from our challenges that we usually face because life is filled with challenges. So that's about it. Thank you. The major challenges for us that usually we face related to job opportunities, right? So in general, uh, we don't have a more job opportunities for us. So हमें जो लाइक इंटरव्यूज़ हैं एटलीस्ट हमें इंटरव्यूज़ अटेंड करने का एक चांस हमें मिलना चाहिए जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल। सो आफ्टर दैट बाकी तो सब इंटरव्यू पे डिपेंड करता है एंड ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स लाइक स्किल्स एंड कई बार क्या होता है कि लाइक इंटरव्यूज़ के लिए हम लाइक अटेंड नहीं कर पाते हैं या फिर कोई भी ऐसा इशू रहता है तो वो सब लाइक दैट कैन बी इम्प्रूव। तो वहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है और मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ हमें भी मिलनी चाहिए जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। सो हम भी मतलब जो विजुअली कम्युनिटी है वो भी वेल एक वेल प्लेस पर सेटअप हो सकती है। That's true, and I absolutely second your thought. Um, you guys are technically skilled, and definitely, you sort of deserve good job and good job opportunities at least, and I absolutely agree with that. Um, Next up, Vishal, you can just tell something about your challenges and how do you overcome it. Yeah, so there are quite a few challenges we encounter. Sometimes we cannot access certain text or programs on the computer screen because some websites and softwares aren't made in a way we can easily use them. This means we might need help from someone who can see. So another challenge is that there aren't as many chances for us, especially when it comes to jobs in tech field. So there are fewer opportunities available for people who are visually impaired. This can make it harder to find work and show our skills. So yeah, these are some challenges that we usually face. I agree to that. Thank you so much, Vishal. We hear you. Parmeet, over to you. Yes. So मतलब काफी challenges फेस करने पड़ते हैं using the technology and using the technology and computer programs. In the my case, uh, मैं more challenges uh, which I uh, which I face like to create a WordPress website. So कई जगह पे स्क्रीन रीडर जो मैं ऑन करता हूँ वो नहीं एक्सप्लेन करता चीज़ों को।
तो उसके लिए मुझे काफ़ी मैं जैसे मैंने बताया था मैग्निफिकेशन टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी वजह से कि आइज पे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। सो कुछ ऐसा मतलब चीज़ों के साथ होना चाहिए कि कुछ ऐसे टूल्स बनने चाहिए, डेवलप होने चाहिए जो कि इन चीज़ों को मतलब टैकल करने में हेल्प करें हमें। एंड इससे ओवरकम करने की बात है जहाँ तक की, तो उसमें क्या है कि अब हम चीज़ों को सीखते हैं। अब जैसे कि मैं करता हूँ चीज़ों को तो करना पड़ता है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अगर अगर नहीं हो सकता, जैसे कि अगर मैं होता मैं अगर वेबसाइट जैसे मैं बनाता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, तो कई जगह पे चीज़ें नहीं मिलती है, तो हमें खुद से चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च फॉर आवर सेल्फ कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए, क्या क्या टूल्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सकते हैं। उसको अगर हम रिसर्च करेंगे तभी हम उस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल हो सकती है बट हमें सही चीज़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। और ये तो रही ओवरकम करने की बात। और इसके साथ ही अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें मार्केट के अंदर, सो अवेलेबल है बट लो अमाउंट में है, काफ़ी लो अमाउंट है जॉब्स का इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है, स्किल्स सीखने को मिलते हैं, काफ़ी कुछ लर्निंग्स मिलती है, स्पेशली टेक्निकल बैकग्राउंड में, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में। सो टेक्निकल बैकग्राउंड में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहा है, और इसमें भी जॉब्स अवेलेबल है, बट मैंने बताया जैसे कि लो अमाउंट में है फॉर वी आई। ठीक है। सो इसमें अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हाँ, ये बात मानता हूँ मैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अभी काफ़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे अगर लोग अवेयर होंगे इस चीज़ से, तो अपॉर्चुनिटीज आई थिंक होगी अवेलेबल। थैंक यू। Thank you so much, Parmeet. And the best part about all of you was that you have faced a lot of challenges. I know that. But what I loved the part was that how you have overcome it with utmost strength and grace. And hats off to each one of you. Quickly wrapping up the session with the last question. Actually, it's not a question. I would just like each one of you to give two liners message to everyone as to why you joined this session, what was your purpose behind joining this chat show today, and yeah, two lines from each one of you. Let's start with you, Vishal. Yes, ma'am. Uh, our main goal for being on this chat show is to let people know about those of us who are visually impaired. We want them to understand our abilities and what we can do. Also, we aim to inform people about us so they might think about offering us more job chances in the tech field, especially in the tech field. So yeah, Thank you so much, Vishal. um, Pavan, you can go next. I want to convey my message from this session. That is, like we should given an opportunities in the especially technical background, and some mentors should join us just like Navika ma'am, uh, so that we will able to gain more and more knowledge in the technical field. So that's all about it. Thank you so much, Pavan. For me, So first of all, thank for Navika ma'am to organize this session, and मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सेशन के थ्रू काफी लोगों तक मतलब ये सेशन पहुंचेगा। तो आई वांट दैट मोर पीपल कनेक्ट विद अस, एंड लाइक जैसे नविका मैम हमसे जुड़ी, उन्होंने हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझाया, सिखाया। तो ऐसे ही काफी लोग और भी जुड़े, सिर्फ हमसे ही नहीं, काफी जैसे हमारी कम्युनिटी से थोड़ा जुड़े, तो कुछ चेंज आ सकता है, कुछ इनोवेशन हो सकता है। सो मैं यही चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल फील्ड के लोग हमसे जुड़े, इस कम्युनिटी से जुड़े, ताकि और भी लोग जो हमारी तरह हैं वो आगे बढ़ सके।
और टेक्निकल फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हों, अपॉर्चुनिटीज आए। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू। All right. Thank you so much, Parmeet, Vishal, Pawan. Thanks a lot once again from the bottom of my heart. Thank you so much for joining this session. You have थैंक यू been a मैम। true inspiration. You have been a true inspiration for everyone, and I'm sure, and I also hope that whosoever watches this video gets inspired, and hopefully your voices reach out to the correct people who can actually provide you with job opportunities in the technical world, because I'm sure you can really turn out to be an asset for them. You have a lot of technical skills and technical expertise. I know that for a fact, and now even the world is going to know about it after this session. So thank you so much once again, and yeah, you would always have my support as a mentor. You can always reach out to me, and I'll try to train you as much as possible in some other technical fields as well, so that it becomes like a feather on your cap. So yeah, thank you so much once again for joining, and yeah, thank you so much everyone for watching this session.